Just a second, no? Okay, let me take it over here. Okay, just a moment, no? Let me share it again. Automatically, it just got paused. Okay, so we were discussing that how to find what will be the formula for sum of n terms of a series. Let me take the questions. Just a second. Yeah. So the first question is find the sum of first n terms and the sum of first 5 terms of geometric series the series is given like this: 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 dot dot dot. Okay, we have already discussed that the formula for finding the sum of geometric series is Sn is 1 minus r to the power n by 1 minus r. You can also write the same formula as a r to the power n minus 1 by r minus 1. It's the same thing. Okay, so this is the formula for finding the n term of this is the formula for finding the sum of n terms of GP. Okay, already a sequence is given over here: 1, 2 by 3, 4 by 9. We have to find the sum of 5 terms.
For n term, this is the formula we know. Okay, please find the sum of 5 terms. What is A? What is R? N is 5. N is 5. Please tell me, Ali and Alina, what is A over here and what is R over here? Yes. In this sequence, what is A? What is R? One is A. A is 1. and R is. What is the common ratio? It is 2 by 3, right? See carefully, if you will take the second term and if you that divided by 1 means 2 by 3. If you want Yes. to just be assured that yeah, whatever R you are taking that is correct, then you can check the next one also. 4 by 9 by 2 by 3 is what? If you will do the division of third term by second term like this, you can write it as a 4 by 9 divided by 2 by 3. You can write it as a 4 by 9 multiplied with 3 by 2. Okay. Still we are getting 2 by 3, right? 2 by 3 Yes. is the common ratio. Please don't get confused. 2 by 3 is the common ratio. First 5 term sum we have to find. We will be using the formula 1 minus R is 2 by 3 to the power 5. Okay. By 1 minus 2 by 3. Please solve the denominator at first. And your numerator also. 2 by 3 to the power 5. It will be what? Please do the simplification and let me know what are you getting. What are you getting? Ali and Alina. Please tell me what are you getting? Two to the power 5 by 3 to the power 5 over 1 minus 2 by 3. Will it be? LCM will be 3 over here and in numerator will be 1. having 3 minus 2. Yes or no? Right? Yes, ma'am. Okay. In denominator we are having 3 minus 2, that is 1 by 3.
And in numerator, we'll be having 1 minus 2 to the power 5 is 32. Okay, and 3 to the power 5, check it. 3 times 9, 3 times 27, 3 times 81, 3 times 243. Okay, please do it. Please do the subtraction in the numerator. Just a second. So 200, 1 minus 32 by 243. If you will be doing it, you will be having 243 minus 32. Okay, by 243. In denominator, still you are having 1 by 3. This much of simplification we have to do, okay, by ourselves. So please do it and tell me the final answer. Please do it, no? Yes. Are you doing it, Alina and Ali? 633 by 243. Okay, let me check. 243 minus 32, it will be 1. 4 minus 3, 1. We'll be having 211. Okay. Yeah, into 3 will be there. By 243 will be there. Yes. 3 1 times 3, 3 1 times 3. Yeah. Okay, let's do the simplification, like cancellation. So 3 8 times 24, 3 1 times 3. Still, is it possible? 1 plus 1, 2? No, it is not possible. So 211 by 81. This is the sum of 5 terms of the given GP. Okay, this formula is completely simplification based. We just did the simplification, we got the sum of first 5 terms. Here the question says that find the sum of first n terms. For sum of first n terms, see, you can just put a over here and r over here, and power will remain same, and just leave your answer like that. Okay, for sum of first n terms, what you can do, you know the sum of n terms, the formula is a 1 minus r to the power n by 1 minus r. Okay, and if the sequence is mentioned in the question, if the series is given, then you can take a from there, you can put it over here. Okay, you can take r from there, you can put it over here, and then you can leave your answer. You can say that this is the sum of n terms. Yeah, denominator simplification is possible, that you can do, and you can leave your answer like this. Just leave it like this, because power n we cannot do the simplification. Okay, now the next one.
How many terms of the GP 3, 3 by 2, 3 by 4 are needed to give sum as 3069 by 512? How many terms are needed which will give the sum this? Again, we'll be using the sum formula, but this time we know Sn. Okay, Sn we know, n we have to find. Please try finding n. Okay, we know Sn 3069 by 512. We know this one. Okay, is equals to the formula A. Okay, 1 minus r to the power n by 1 minus r. We'll be writing A, we will be substituting from here. R, we will be substituting from here. First, you tell me what is R. Yes, what is R? Ali and Alina, what is R? Ma'am, I'm finding. Please find it. R is 3 by 2. R is, 3 by 2. let me check. Second term divided by first term. Okay. If you are getting confused that what to do over here, let me show you. If you are having fraction by fraction, then I believe you are sure about it, what to do over here. Just take 5 by 3 and the reciprocal of this fraction, it will become 2 by 7. If you are having a whole number by a fraction, okay, then the possibility is you can make the whole number like fraction, and then you can do it like the first one. Okay, or maybe directly if you want to take out the value, then you can think about it that 8 divided by 2 by 3 is there, so 8 into 3 by 2 will be there.
Either you go to second step and then come here, or you do directly like this one. Okay. Now, if your denominator is a whole number and your numerator is a fraction, then you need to use the same concept. 5 by 7 is divided by 8. That means multiplied with 1 by 8. Yes or no? 5 by 7 divided by 8 is there. Okay. These concepts we need to use over here. 3 by 2 is a fraction we need to use. Divided by your whole in fractional form, or you understand 3 by 2 divided by 3 is there. Okay, 3 by 2 divided by 3 is there. If we will convert this division sign in multiplication sign, the very next fraction will become the reciprocal. Reciprocal of 3 will be 1 by 3. Okay, 3 3 gone, we are just getting 1 by 2. Are you getting it? Are you getting? Yes, Yes ma'am. or no? Our R is 1 by 2. Our A is just 3. A is just 3. R is 1 by 2 to the power n over 1 minus R. R is 1 by 2. Okay, let's do the simplification. Let me wipe this part. So we will be having 1 minus 1 by 2 in the denominator. That means just 1 by 2 in the denominator, right? In denominator, we'll be having just 1 by 2, right? In denominator, we'll be having 1 minus 1 by 2 means just 1 by 2. And in numerator, this 3, okay, 1 minus 1 by 2 to the power n, still I am writing as it is. Here on the other side, we are having 3069 by 512. 3069 by 512. Okay, here 1 by 2 is there. Some right side I am talking about. Something divided by 1 by 2. That means multiplied with 2. Yes or no? Can I write this 2 over here? Can I? Yes, ma'am. Okay. So basically here we are having 6. This 6 we will shift it to other side. We don't have any option. One by one we will start shifting the numbers. The n which we want to find, that is the exponent. So this 6 we will be shifting to other side. It is 6 over here. You will shift it to other side. It will go in the denominator because here it is in multiplication. So basically this 6 will come and sit beside 512. Are you getting it? Are you getting it? Yes, ma'am. Okay, 1 minus 1 by 2 to the power n. Now let's start doing the cancellation if possible. So I can see the numerator and denominator both are divisible by 3. 3 2 times 6, 3 1 times 3, 3 2 times 6, 3 3 times 9. 1023 we are getting. Now 1023 and 512, is it divisible? Not sure. Let's write it as it is 1023. No, it is not divisible. And in the denominator 512 and 2, let's do the multiplication. 4, 2, 1 times 2, 5, 2 times 10, 1024 we are having. 1 minus 1 by 2 to the power n. If you will shift this 1 to this side, it will become minus 1. But that side minus 1 by 2 will be sitting. Let's keep it like that. Minus 1 by 2 is sitting still on that side and having power n. Okay, and if you are just taking 1 to this side, you will be having 1023 by 1024 minus 1. Okay, now you will be doing the subtraction by taking the LCM as a 1024. You will be having 1023 minus 1024 in the numerator, and still it will be 1 by 2 to the power n is there, but that 2 is negative. So we are having minus 1, check it, minus 1 by 1024. And here also minus is there, minus minus both side we can do the cancellation.
And now we can focus on this 1024. We will try writing it as a in the exponent form, so that both side we can compare the exponent. Let's think about it. 1024 means 2 to the power what? 2 5 times 10, 2 1 times 2, 2 2 times 4, again 2, 2 2 times 4, 2 5 times 10, 2 6 times 12, again 2. Okay, you can take a bigger number also, 4 and 8 also you can take. From there directly you will be getting the idea. 512 means 8 into 8 into 8. Okay, so from here we'll be getting 3 2 to the power 3. From here we'll be getting 2 to the power 3. From here we'll be getting 2 to the power 3. So you can just get the idea that 3 3 6 7 8 9 and one more 2, that means 2 to the power 10. 1024 का मतलब होता है 2 to the power 10, और इसे हम 1 by 2 to the power 10 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 to the power 10 1 ही होता है. ओके, तो न्यूमरेटर में भी हमने पावर, you have given the exponent, doesn't matter because we are having 1 over here. 1 to the power anything we are allowed to write. There also we can write 1 by 2 to the power n, and now we can say n will be nothing. By comparing exponent on both side, n is equals to 10. Can we say that? Yes or no? Yes, ma'am. So this is how this much lengthy calculation we have to do over here. We don't have any other option. Question is very basic, very straightforward. The sum is given and n we need to find. Sum is given and from the formula n we need to find. But when we substituted, the calculation was not that simple. Was not that simple. However, we know how to solve it, and accordingly, like we were just using the concept, the basic concept of fraction and all, and we ended up getting n as a 10. Is it crystal clear to both of you? Yes, ma'am. Now the next question is, I am giving you one question from AP, because after this one also, after just this one, we'll be solving one question from GP. So I'm giving this question so that we can relate like the GP concept with the AP concept. Okay, so the question is the sum of 4 consecutive numbers in an AP is 32, and the ratio of the product of the first and the last term to the product of, let me say it again, read the question carefully, mean the, like, I'm writing it, you keep on reading it, okay? Because this is from AP. I think it doesn't require explanation. Okay, the sum of 4 consecutive number which are in AP is 32. 4 consecutive number which are in AP, the sum is 32.
Ma'am, I can't see the screen. Okay, you cannot see the screen. Just a second. Can you see it now? Can you see it? Yes, ma'am. Okay, so here the question says that the sum of four consecutive number which are in AP is 32. And the ratio of product of the first and the product of two middle term is 7:15. Okay, the ratio of product of first, wait, I think I missed something over here. First and the last term. Okay, and the. So basically the ratio between product of first and last product over the product of two middle term, that ratio is 7/15. If you are having an AP like this, for example, just the explanation of this question, if suppose ABCD are in AP, so the ratio of first, the ratio of product of first and last, that is AD by the middle two product, that ratio is 7/15. That's what the question says. And apart from this one, it is also given over there that A plus B plus C plus D, sum of all is 32. You have to find the numbers. Can you tell me, Ali and Alina, what will be the approach over here? Ma'am, I'm not sure. Okay, let me explain. Okay, so four consecutive, like एक के बाद एक four terms है, ऐसे four terms हमें लेने हैं जो AP में होने चाहिए. ओके, और उनका सम क्या है, 32 है. ऐसे जब भी हमें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने पढ़ रखा है कि जनरल फॉर्म एपी का कैसा दिखता है. फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2D, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3D, कुछ ऐसा हमारा एपी दिखता है. हाँ या ना? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, अगर हमारा एपी कुछ ऐसा दिखता है तो क्या हम ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म लेके बोल सकते हैं कि ये बैक टू बैक फोर टर्म हमने ले लिया और फिर इसे ऐड करके हम इक्वेशन बना दे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें? हाँ, हम ये कर सकते हैं. बट जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो इतना ह्यूज हो जाएगा. ओके, तो उस सिंप्लीफिकेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक इजियर मेथड भी है. ओके, जो मेथड अभी मैंने डिस्कस किया कि इसे हम लेंगे, इसे हम ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 32 लिख देंगे, एक इक्वेशन मिल जाएगा. फिर दूसरा कंडीशन यूज करके प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल वन करके फिर हम एक रेशियो क्रिएट करेंगे. इससे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. एक हमारे पास इजियर मेथड है. एपी की बात कर रहे हैं. अगर अब तक हमने कैसा एपी देखा है, अब तक हमने ऐसा एपी देखा है जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शनल टर्म भी हो सकता है. मतलब एपी का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर ही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, बस डिफरेंसेस सेम सेम होना चाहिए. अब वो डिफरेंस फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इरेशनल हो, या फिर जो भी नंबर हो, डिफरेंसेस मस्ट बी सेम. राइट? राइट? So Yes, here what ma'am. we'll do, no, here what we will do, here rather than taking this AP, ये जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ रखा है और जो हम सारे क्वेश्चंस में लेते आए हैं, ये वाला फॉर्मेट हम नहीं यूज करेंगे इस बार. इस बार हम खुद से एक फॉर्मेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. कितने टर्म्स हमें लेने हैं? 4 टर्म्स हमें लेने हैं. तो हम क्या करेंगे, एक एक टर्म ये ले लेंगे, दूसरा टर्म ये ले लेंगे. ठीक है, मे बी नो, नो विल नॉट टेक दिस वन.
First, like one of the term will be taking this A. Let me check whether it will work or not first. Okay. So yeah, we'll be taking, if I am asking you A के पहले वाला टर्म क्या होगा, तो कैन वी से दैट A के पहले वाला टर्म कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं A माइनस डी के पहले वाला टर्म कैसा दिखेगा, तो हम कह सकते हैं कि A माइनस डी के पहले वाला टर्म कुछ ऐसा दिखेगा. अगर मैं बोलूं A माइनस टू डी के पहले वाला टर्म कैसा दिखेगा, तो हम कह सकते हैं A माइनस टू डी के पहले वाला टर्म A माइनस थ्री डी कुछ ऐसा दिखेगा. हमें 4 टर्म्स लेने हैं जो कि एपी में हो. ओके, तो हम इस बार क्या करेंगे कि एक टर्म ये लेंगे. ओके, एक ऑल्टरनेट करके दूसरा टर्म ये लेंगे, ऑल्टरनेट करके तीसरा टर्म हम ये लेंगे, एंड ऑल्टरनेट करके चौथा टर्म हम ये लेंगे. हम ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी वाला एपी नहीं यूज करेंगे, उससे बहुत ह्यूज कैलकुलेशन हो जाएगा. हमारा पूरे क्लास में हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे आज. सो नेवर एवर वी आर गोइंग टू टेक दैट वे. We will be taking it a minus 3d as one of the term. Another term will be taking a minus d. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? I am coming to that. Okay, a plus d and a plus 3d. This way we will be taking 4 terms. Now the question is it in AP? Let me show it to you. It's in AP. If you will find the differences between second term minus first term, you will be getting a minus d minus a plus 3d. Okay, a gone, 3d minus d will be 2d. So basically your difference is 2d. I started the discussion by telling that difference तो कुछ भी हो सकता है, बस AP का एक ही कंडीशन था, सारे डिफरेंस सेम होने चाहिए. लेट्स चेक इट. a प्लस डी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a प्लस डी माइनस a प्लस d 2d. अब तक तो हमें डिफरेंस सेम ही मिल रहा है और लग रहा है कि जो हमने रैंडमली पिक किया है ये एपी में है. लेट्स चेक इट. ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस डी 2d. ओ या, जो हमने 4 टर्म्स ले रखे हैं वो एपी में ही है, हाँ या ना? और कॉमन डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है. जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वहां कॉमन डिफरेंस जस्ट डी था, बट 2d भी तो हो ही सकता है कॉमन डिफरेंस, हाँ या ना? डिफरेंस बस सेम होना चाहिए, यही कंडीशन था ना एपी में. यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. so the 4 terms which we have taken, these are in AP. ऐसे क्यों हमने 4 टर्म्स ले लिया? क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे और व्हेन वी विल बी डूइंग द सम, थिंक अबाउट इट. When we will be doing the sum, you will find that d gone. Okay, I'm talking about this d, the d gone, cancelled out, and 3d gone, and very easily we will be able to take out a value. Yes or no? Yes or no? Very easily we will be able to take out a value from here. Yes or no? If the sum is 32, then we can take out a, and it will be really simple, right? इसलिए हमने ऐसा कुछ एपी लिया है. ठीक है, अगर हम पहले वाला जनरल वाला एपी ले लिए होते तो फिर इतना इजीली ए और डी हम नहीं फाइंड कर पाते. बट स्टिल अभी तो हमें सिर्फ ए ही पता चला है, डी कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड कंडीशन भी तो यूज करना है. सी, सेकेंड कंडीशन ऑल्सो इट विल हेल्प यू. The second scenario says that the multiplication between the first and the last one. Think about it. When we'll be doing the multiplication between a minus 3d and a plus 3d,
It is just a square minus 3d complete square. When you will be doing the multiplication between the middle two term a minus d and a plus d, it will be just a square minus d square. And that ratio is given as 7/15, where you already know a value. तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें स्पेशल सीक्वेंस की जरूरत है. ओके, जो जनरल सीक्वेंस है वो हम नहीं ले सकते हैं. एपी का मतलब होता है डिफरेंसेस कॉमन होने चाहिए. अब वो डिफरेंस तुम 3D मेंटेन करो, 4D मेंटेन करो, ओनली डी मेंटेन करो, डजंट मैटर एट ऑल. गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, from here easily we will be able to take out we will be able to take out that our numbers are like this. Our numbers are a minus 3d. Okay, हमने क्या किया? हमने बैक टू बैक नंबर नहीं लिया. अभी मैं फिर से लिख रही हूँ हमारा जनरल सीक्वेंस कुछ ऐसा दिखता था. a प्लस डी, ओके, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d. हमने क्या किया? पहले वाले नंबर के बारे में भी सोचा कि ये तो a माइनस डी होगा, इसके पहले वाला a माइनस 2d होगा. ओके, आई एम राइटिंग इन अ ब्रैकेट. इसके पहले वाला a माइनस 3d होगा. हमने क्या किया? हमने सोचा 3d को लेते हैं, ठीक है, d को लेते हैं, ऑल्टरनेट लिया हमने, देन a प्लस डी को लेते हैं, देन a प्लस 3d को लेते हैं. और ऑफ कोर्स पहले डी कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस था, अब कॉमन डिफरेंस 2d हो गया. Okay, which we can see from the pattern also. Okay, now why not we have taken a and all, why we have started with 3d? हमने दूसरा जो कोई दूसरा 4 कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया? तो थिंक अबाउट इट. इफ यू वुड हैव टेकन a माइनस 2d, अगर हमने a माइनस 2d ले लिया होता, पहला वाला a माइनस 2d, एक छोड़ के दूसरा वाला जस्ट a, एक छोड़ के तीसरा वाला a प्लस 2d, एंड देन 1 2 3, एंड देन एक छोड़ के चौथा वाला a प्लस 4d. ओके, अगर कुछ ऐसा हमने ले लिया होता, तो क्या हम देख पा रहे हैं कि एडिशन करने के बाद 2d तो कैंसिल हो जाएंगे, बट स्टिल हमारे पास एक d वाला टर्म रह जाएगा, a भी रह जाएगा, d भी रह जाएगा, कुछ एक इक्वेशन मिल जाएगा. और दूसरा वाला इक्वेशन इतना ह्यूज होगा जो कि मल्टीप्लाई करके माइनस 2d a प्लस 4d का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एंड डेनोमिनेटर में a प्लस 2d से मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ये रेशियो 7/15 दिया है. यहाँ से मे बी a या d फाइंड करके इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. आ रहा है समझ में कितना Yes, ह्यूज होगा? ma'am. इसीलिए हमने a माइनस 2d वाला भी नहीं लिया, इसीलिए हमने जनरल सीक्वेंस भी नहीं लिया. हमने ऐसा कुछ लिया जो पहले ही एटलीस्ट एक अननोन तो कैंसिल हो जाए. ओके, एटलीस्ट हमें a या फिर d मिल जाए. अकॉर्डिंगली हमने एक ऐसा एपी चूज किया. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. ऐसे जब भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म की बात हो, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा ही सम दिया हुआ रहता है. अब अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म के जगह 3 कंसेक्यूटिव टर्म लिखा होता क्वेश्चन में, तो हम क्या लेते एपी में? तो हम फिर से बैठते और फिर से सोचना शुरू करते कि क्या ले इस बार. ठीक है, अगर हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म के बारे में लिखा होता इस क्वेश्चन में, तो हम क्या लेते? हमारा एपी अगेन मैं लिखती हूँ. हमारा एपी a प्लस डी, a प्लस 2d, ओके, a प्लस 3d, ऐसा कुछ दिखता है. बट हम यहां से नहीं ले सकते 3 कंसेक्यूटिव टर्म, तो हम इसके पहले वाले टर्म के बारे में भी सोचते हैं. और अब हम सोचेंगे कौन सा 3 टर्म्स हम ले सकते हैं जहां पे डिफरेंसेस ऑफ कोर्स सेम होने चाहिए. कुछ भी हो डिफरेंस, 2d 3d 5d d/2, कुछ भी हो, but differences has to be same, because we again and again we are taking an ap. Okay, so let's think about it. If we will be taking this a, if we will be taking the previous term, just the previous one, this one, and if we will be taking just this one, will it be possible that some of these three
is whatever be the number, maybe 24, maybe whatever is given in the question. See, can you see that still we can cancel out D from here? Can you see it? तो अब से हम याद रखेंगे कि ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी थ्री टर्म्स की बात हो तो हम क्या लेने वाले हैं? हम लेने वाले ए प्लस डी एंड इसके पहले वाला टर्म ए माइनस डी। ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी फोर टर्म्स की बात हो तो हम क्या लेने वाले हैं? हम लेने वाले ए माइनस थ्री डी, उसके बाद ए माइनस डी, देन ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। ओके, generally these two types comes in exam. ओके, अगर हमें 5 टर्म्स लेने हो तो हम क्या करेंगे? क्या पता ऐसा भी कुछ क्वेश्चन में आ जाए। चलो सोचते हैं, ठीक है, चलो सोचना शुरू करते हैं कि अगर हमें 5 टर्म्स लेने पड़े तो हम क्या करेंगे। कौन से ऐसे टर्म्स हम ले लें जहां पे सब कैंसिल हो जाए। तो 3 वाला तो हमारा ऑड नंबर वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, ये 3 ले लिया। अब 5 में क्या, इसके a माइनस डी के पीछे वाला a माइनस टू डी ले ले और इसके बाद वाला a प्लस टू डी ले ले। ओ हाँ, इट इज वर्किंग। कैन यू सी इट, अली एंड अलीना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो यहां से हमें ये समझ में आया कि जस्ट 3 एंड 4 वाला हम याद रखेंगे तो 5 वाला हम क्रिएट कर पाएंगे और 4 वाले की हेल्प से हम 6 वाला भी क्रिएट कर पाएंगे। हाँ या ना? Yes, हाँ या ma'am. ना? 4 टर्म्स हमें ऑलरेडी पता है। अगर 6 टर्म्स की बात हो तो इसके एक पीछे वाला लेंगे, पीछे वाला ध्यान रहे कि ऑल्टरनेट हम ले रहे थे, और इसके एक आगे वाला ले लेंगे तो हम 6 टर्म्स ले लेंगे जहां सारे डी कैंसल आउट हो जाएंगे। ध्यान रखना कि हम ऑल्टरनेट वाला ले रहे थे यहाँ। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर मैंने एपी का क्वेश्चन क्यों ले लिया यहाँ पे? वी आर लर्निंग जीपी ओवर हियर। yes, AP is there, here and there AP is there, but basically they are focusing on GP, new sequence, because again we'll be having the same type of question in GP also. Let me take the question. The sum of first 3 terms of a GP is 13 by 12 and their product is -1. Find the common ratio. And the terms. ओके, यहाँ भी सम की बात हो रही है। अगर हमारा जो नॉर्मल जीपी हम जनरल फॉर्म लेते, ए नेक्स्ट वाला ए आर, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए आर क्यूब, नेक्स्ट टर्म ए आर टू द पावर 4। अगर यहां से हम फर्स्ट 3 टर्म ले लें एंड इन तीनों का सम हम शो करें कि 13 बाई 12 है, चलो ट्राई करते हैं। ओके, ए आर स्क्वायर, इसका सम क्या है? 13 बाई 12 है एंड इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है? -1। दैट मीन्स ए इंटू ए आर स्क्वायर, द प्रोडक्ट इज -1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। Now what we have to find? We have to find the common ratio. R we have to find, and the terms also separately. The terms also we have to find. What is the first term? What is the second term? What is the third term? Okay. So anyway, if we will be able to take out A and R, first, second, third term we can find. But how to find A and R? So the first one, if we will try, we cannot do anything. Okay, A we can take out common, but that will not help that much.
What about the second one? The second one, we are having a cube r to the power 4 is equals to -1. From the second one, if we will try finding a or r, no, putting that in the first is not possible. From the first one, if we will try finding a, if we will take out a common, it will be 1 plus r square is equals to 13/12. और अगर हम यहाँ से a फाइंड करके, ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या सीखा था? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में किसी भी एक इक्वेशन से a या d या फिर x और y फाइंड करो, ओके, एंड दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. ऐसे हम सॉल्व कर पाते थे इक्वेशन. अगर हम सेम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, कैन यू सी व्हाट वी आर गेटिंग? कैन यू सी? You will get stuck. Okay, that's why we will not take these three terms. Are you getting it, Ali and Alina, that we will get stuck? Yes, ma'am. Yes. We will not be taking this three term, we will not take. Okay, what we will do, we will make a special sequence which will be in geometric progression. Okay, the general one will not be taking. सो थ्री टर्म्स की बात हो रही है. जब हमारे एपी में थ्री टर्म्स की बात होती थी तो हम क्या करते थे? एक पहले वाला ले लेते थे. अब मैं यहाँ पूछूं कि ए के पहले वाला टर्म क्या होगा? कैन यू टेल मी, अली एंड अलीना? ए के पहले वाला टर्म क्या होगा? अगर ए है, ए A के by बाद ए, यस, A by 2. ए बाई आर, नो, Yes, ma'am. ए बाई आर, नो, Yes, ma'am. यस, ए बाई आर. ओके, क्योंकि हमारे सीक्वेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो हर एवरी टाइम आर मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए आर मल्टीप्लाई हो रहा है. फर्स्ट वाले में आर मल्टीप्लाई किया, सेकेंड मिल गया. सेकेंड वाले में आर मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म मिल गया. तो ऐसे प्रीवियस टर्म की बात हो रही है तो आर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? जस्ट अ सेकेंड, नो, जस्ट सो यस, दिस पॉसिबिलिटी विल वर्क. अगर हम ए बाई आर, मुझे अभी ये मीटिंग खत्म करना होगा. ओके, वी आर गोइंग टू कीप इट दिस मच. There is one urgency. So if